So if you could remember in the last lecture, we were actually studying a very important uh, MIMO receiver that is called the zero forcing receiver or the decorrelator or the interference nuller. And after all the mathematics that we covered, we actually saw that the received signal could be given as the received signal, let us say, is coming from h1 vector. So h1 vector means that you have sent the signal from the first antenna of the transmitter. So it is received at the first and the second antenna of the receiver. So two paths which are given by h1 vector. So the signal is coming from x1. The signal x1 is coming from h1 channel vector. We take this signal and we actually take its dot product with respect to phi 2, where phi 2 is the corresponding vector which is orthogonal to the h2 vector. So I map my h1 vector onto the orthogonal space of h2. So in this way you can very well see that so in this way by projecting, as you can see here, the channel inversion eliminates the interference from the transmit antenna 2 by projecting the received signal in the direction orthogonal to H2. So we will eliminate the interference from the second antenna, which is also coming to the first and the second receive antenna simultaneously. And all this was discussed. This point was actually left here. Yes. So here we have two transmit and two receive, and we just want the signal of the first transmit. We do not want the signal of the second transmit. The second transmit antenna is actually acting as a interferer. All right. For example, if you say no, second antenna signal, I actually want to receive that signal. This is not of the second user, it is also the same user, then no problem. Then what will be happening that you will be getting double diversity gain, because you won't be cancelling the signal coming from the second antenna. Uh, Second thing, that if you want the norm of the entire vector, if you want the reception to be small, for example, then the norm of this whole vector has to be small for poor reception of x1. This was for the case when we are saying that both the antennas, they are sending the same signal for one user. There is no interference. In that case, you have to fight over all this full norm. All right. Now, but here you can very well see what is happening here. Here we are projecting h1 onto phi 2, or projecting h1 onto a vector which is orthogonal to h2. If, for example, the component of h1 which is perpendicular to h2 is very small, then you can very well see that if you will project h1 onto phi 2, or in other words into h2, you will get a very small number, and hence you will not be able to get back your signal. The ML detector, maximum likelihood detector, as we saw in LMUT, that actually uses joint detection of two samples, and that is why it gives us the diversity gain of. This we discussed there. We can think, as we are applying no coding, we can think of the two transmitters as two distinct users, each with a single antenna. The same channel coefficients, all right, but we have two different users now working. Each antenna is a user. Now we either, rather than saying that we have actually a MIMO, we have actually
a single user having a single antenna. Okay, so in our receiver, I'm getting the signal of the first user as well as the second user from the second antenna. So I have to null out, I have to zero force the signal from the second user. So that is why you will use this type of zero forcer or zero or interference nuller or decorrelator. So you can see this was H2, this was H1. I will project H1 onto phi 2 by projecting H1 onto phi 2. You can see. So if you project H1, well, actually we will be projecting Y onto phi 2, which means I will be projecting actually H1 onto phi 2. So you will get this much projection length. If you project Y onto phi 2, you will get this much projection. All right. So what was phi 2? Phi 2 was a vector that was orthogonal to H2. You see this was H2 and this was your phi 2. If you take dot product of H2 with phi 2, you will get 0. This we discussed in the last lecture. So why I am projecting Y onto phi 2, so that I can get rid of H2. Vice versa, if you will be trying to getting the signal from the H2 antenna, you will project Y onto phi 1, a vector which will be orthogonal to H1. This is called in research papers, decorrelators, zero force receivers are very much used, especially in research literature which is related to MIMO. सर phi 1 और H1 भी आपस में ऑर्थोगोनल है? हाँ, यह जाहिर है phi 1 H1 भी ऑर्थोगोनल है, जैसे phi 2 H2 होता है वैसे phi 1 और phi 1 और H1 भी ऑर्थोगोनल। सर जिस तरह सर हम H2 को खत्म क्यों करना चाह रहे हैं? H2 को हम इसलिए ख़त्म करना चाह रहे हैं कि जो H2 के साथ जो सिंबल्स आ रहे हैं वो दूसरे यूज़र के, वो हमारे लिए इंटरफेयर्स हैं, उनको हमें डिलीट करना है, उनको हमने बेसिकली नल आउट करना है। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ज़ीरो फोर्स करना है उनको, या उनको नल करना है। H1 के जो हैं H1 के वो हमें डिजायर्ड हैं और H2 के नॉट डिजायर्ड हैं। हाँ, वो वाइस वर्सा भी होता है कि आपको H2 के डिजायर्ड हैं और H1 के नहीं डिजायर्ड, वो कोई भी हो सकता है। मकसद सिर्फ ये हुआ कि आपने एक ही माइमो चैनल को दो यूजर्स को दे दिया ना। पहले क्या था कि एक ही यूजर है उसके लिए खाली साइमो है, एक ही यूजर उसके लिए सारा माइजो है, एक ही यूजर के लिए सारा माइमो है। अब आपने कहा नहीं मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैंने अपने ही एक ही माइमो के अंदर दो यूजर्स बिठा दिए। इससे क्या होगा कि आप अगर इंडस्ट्री में बैठे आपके नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ा देंगे अपने, अगर चैनल अच्छा है तो काम कर जाएगा आपका, नंबर यूजर आपके डबल हो जाएंगे। मतलब है यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास अगर माइमो है 2x2 का, तो हमारे पास दो यूजर्स हैं, वो एक एंटीना पे उनकी कम्युनिकेशन हो रही है। हाँ, मतलब आप कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक ही माइमो चैनल को दो यूजर्स के लिए कर, यानी कि जितने यूजर्स होंगे उतने एंटीना लगाने पड़ेंगे हमें। जितने यूजर्स नहीं, अल्लाह के बंदे, एक माइमो चैनल के अंदर आपने दो यूजर्स को बिठाया है ना, वो तो फिर आप पे डिपेंड करेगा ना कि आपने एक जो भी आपका माइमो बनता है, अगर आपका 2x2 का ही माइमो है इंडस्ट्री में, तो फिर आप जाहिर है दो ही बिठा सकते, ज़्यादा तो नहीं बिठा सकते एक चैनल के अंदर। हाँ, अगर आपके पास 10 चैनल हैं तो एक्चुअली तो आपने अपनी कैपेसिटी को डबल कर दिया, आप ज़्यादा यूजर्स को आप देख सकते हैं। यानी कि 10 अगर 10x10 का हो तो हम 10 यूजर्स मैक्सिमम रख सकेंगे उसके अंदर। 10x10 का हो तो बिल्कुल आप 10 यूजर्स रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। सर यही क्वेश्चन है मेरा कि यानी कि जितने यूजर्स होंगे उतने माइमो में एंटीनास लगाने पड़ेंगे। ये गलत क्वेश्चन है ना आपका, यही तो आपको ऐसा नहीं कर सकते। ये तो गलत कह रहे हैं ना आप भाई। यूजर्स तो डिपेंड करता है कि आपने कितनी फ्रिक्वेंसीज और कितने माइमो चैनल्स में उसको स्प्रेड किया हुआ है। यहाँ तो हम एक माइमो चैनल की बात करें ना। सर माइमो चैनल का मतलब क्या है कि एक एंटीना लगा हुआ है और रिसीवर पे भी और ट्रांसमीटर पे भी। हाँ, माइमो चैनल का मतलब हो गया कि आपके पास दो, फर्स्ट करें ये हमारा माइमो है 2x2 है, तो दो इधर हैं दो इधर है, मगर जाहिर है वो माइमो चैनल जो है कहीं ना कहीं डिफाइन तो करना पड़ेगा ना आपको, उसको कोई फ्रिक्वेंसी का देंगे, कोई टाइम का देंगे, अब उसके अंदर आपने दो डालना है। अब ये तो नहीं कि आपके पास उसका बहुत से यूजर्स हैं तो वो बहुत से आपके पास माइमो चैनल्स हैं,
हर एक को आपने डिफरेंट फ्रिक्वेंसी या टाइम में आपने उसको दिया हुआ है, वो डिपेंड, अभी हम देखेंगे जब हम मल्टी यूज़र पे जाएंगे तो आप यूज़र्स को फ्रिक्वेंसी में स्प्रेड कर सकते हैं, टाइम में, थोड़ा बहुत हमने एग्जांपल्स भी देखी हैं, टाइम स्लॉट्स में स्प्रेड कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी में यूज़र्स को स्प्रेड कर सकते हैं, स्पेस में स्प्रेड कर सकते हैं। तो वो एक एडिड डायमेंशंस हैं, वो अपनी जगह हैं, वो तो डिफाइन करेंगे ना हमारे माइमो चैनल्स को। हम तो कह रहे हैं अगर एक ही माइमो चैनल है आपका जिसमें आपने उसको डिफाइन किया, डिपेंड करते हैं कौन सी आपकी 3G 4G जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें आपने एक माइमो डिफाइन किया किसी खास, जैसे अभी हमने TDA में पढ़ा है, थोड़ा बहुत हमने देख लिया ना, उसमें हमें आइडिया, मगर TDA में माइमो नहीं होता, वैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर फर्स्ट करें हमें TDA में मतलब 2G के अंदर नहीं होता, मगर वैसे अगर हम डाल दें तो उसमें आप खुद देख लें कि उसके अंदर आपके पास एक जो आपने बैंड्स आपने मुख्तलिफ 200 किलो हर्ट्ज़ के तकसीम कर दिए, अब एक 200 किलो हर्ट्ज़ का बैंड है, उसमें फिर आपने टाइम स्लॉट्स रखे थे, वो तो थोड़ा ओल्ड फैशन था, मगर फिर भी कुछ समझ आता है कि भाई आपने मेगा हर्ट्ज़ की बैंडविड्थ को 200 किलो हर्ट्ज़ में तकसीम कर दिया। अब जो 200 किलो हर्ट्ज़ की बैंडविड्थ है उसके अंदर आपने वहाँ पे टाइम मल्टीप्लेक्स किया था 8 यूजर्स को, ठीक है, मगर उनका सिग्नल जो था वो 8 कोहेरेंस टाइम तक जा रहा था, मगर वो आपके लिए काफ़ी काम चल रहा था आपका। मगर जब आप इसको मतलब कि माइमो को लेके उसके अंदर लेके जाएंगे तो वही 200 किलो हर्ट्ज़ के चैनल के अंदर आपको मल्टीपल एंटेनास और मल्टीपल यूज़र्स उनके टाइम स्लॉट्स के साथ डिफ़ाइन करना पड़ेगा। हम बस कह रहे हैं कि जो भी आप डिफ़ाइन कर दें माइमो, उस वो बेसिक फ्रिक्वेंसी स्पेस में जिस तरह मर्जी आपने डिफ़ाइन किया, जो आपने डिफ़ाइन कर दिया होगा, तो उसके अंदर भी आप ये कर सकते हैं, आप एक ही यूज़र रखें, नहीं जी मेरे दोनों ट्रांसमिट एंटेना से एक ही यूज़र का सिग्नल जा रहा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही यूज़र जा रहा होगा, मतलब तो ये हो सकता है आपने आपके एंटेना 2 ही लगे हों, उसके आगे आपके 64 यूज़र्स बैठे हों, सबका सिग्नल जा रहा होगा, मगर एक माइमो चैनल के लिए जो है वो आप चाहें तो सिर्फ एक ही का जाएगा या 2 का चला जाएगा, अगर 2 एंटेना है। हाँ, एक माइमो चैनल के अंदर आप 2 यूजर्स से ज़्यादा नहीं बिठा सकते अगर आपने 2x2 को यूज़ किया हुआ है। माइमो चैनल का मतलब है कि माइमो को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करें। TDMA के अंदर देखिए ना, आपने टाइम और फ्रिक्वेंसी से कर रहे थे, अगर आप WCDMA में जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास कोड से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एक कोड का एक चैनल बनेगा अगर आपका 2x2 है या जो भी 2x1 है या 1x1 है, उसके अंदर फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर 2x2 है तो फिर आप कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। और अगर आपने OFDM यूज़ किया तो वहाँ पे फिर एक और सिस्टम होता है, वहाँ पे आप कैरियर्स, ऑर्थोगोनल कैरियर्स देते हैं, उस पर आप हर यूज़र को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि एक ही यूज़र के माइमो चैनल के अंदर आप यूजर्स बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एंटेनास। इसको सारे यूजर्स को मत कहें कि सारे यूजर में 10, ये तो गलत हो जाएगा। यूजर्स तो आप 200 200 300 300 बिठा सकते हैं। हाँ, एक माइमो चैनल हो सकता है आपने 10 माइमो चैनल डिफाइन किए, मतलब फॉर एन एग्जांपल, तो एक माइमो चैनल रिस्ट्रिक्ट होगा उसको अगर आपने नंबर ऑफ यूजर्स में डिवाइड करना है उसको, तो वो एंटेना से रिस्ट्रिक्ट। चैनल एक ही है, चैनल एक ही है, वो 10x10 का है, तो उसमें मैक्सिमम हम 10 ही बिठा चैनल को सकेंगे। फिर आप कंफ्यूज ना करें, माइमो चैनल एक ही है। यस सर, माइमो ये चैनल, माइमो चैनल एक ही है। वैसे चैनल कोफिशिएंट तो आपको पता है 4 हैं टोटल, 2x2 में 4 आएंगे ना चैनल कोफिशिएंट्स। माइमो चैनल सही एक है, उसके अंदर आपने 2 यूजर डाल दिए। इसीलिए तो सही। कहते हैं कि ये पढ़ाने जरूरी है कॉन्सेप्ट्स, वरना आगे जाके फिर आप में और कंप्यूटर साइंटिस्ट में फर्क क्या रहा, जिसको यस सर, कॉन्सेप्ट ही ये नहीं तो पढ़ने जरूरी है। है। हाँ, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। अच्छा खैर, सर एक सवाल है। अच्छा नहीं, एक मिनट, आपसे आपका भी लेता, इससे सर पहले सवाल, इसमें ना जो आपसे एक और जो उन्होंने एक सवाल पूछा था जो इनके सवाल की वजह से रह गया था, आपसे पहले साथ साथ एक जो इन्होंने पूछा, वो क्या सवाल था? सर हाँ, आपका सवाल था ना, आप जी पूछें क्या कह रहे हैं। सर, मेरा बस जस्ट ये क्वेश्चन था कि जो एच है चैनल कोफिशिएंट, वो हमें पाथ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो फाई जोन सा है। चैनल कोफिशिएंट आपको बताता है कि चैनल की वैल्यू क्या है। जी ठीक है, वो हमने देखा एक रेली की तरह, जो हमने अपना अभी तक कोर्स चला रहे हैं वो रेली को चला के चला, मगर वो राइसिन भी हो सकता है, ज़्यादातर तो वैसे राइसिन ही होते हैं, मगर हमने कि उसको रेली डिस्ट्रीब्यूशन दे दी है, जो आपको पता है CN01 दी है हमने। हाँ, अब आप पूछिए क्या कह रहे हैं। तो सर फाई जोन सा वो डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा है कि किस डायरेक्शन में सिग्नल जोन सा ट्रांसमीटर से रिसीवर तक मूव कर रहा है, मतलब ओरिएंटेशन बता रहा है फाई। हाँ, वो ये देखें ना, फाई आप पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, लेकिन ना फाई है क्या? फाई है HI2 कॉन्जुगेट इंटू HI1 कॉन्जुगेट, ठीक है ना। अब आप फाई इधर HI लें और इधर फाई आई लें, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना जरा,
ये है ना, जैसे यहाँ पे आप ले रहे हैं ना phi2 और h1 का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक हो गया ना। आप क्या, नहीं मैं h1 और phi1 का डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 1 1। अब देखिए ना, जब ये मल्टीप्लाई होगा डॉट प्रोडक्ट ऐसे होता है ना, ऐसे करके, ये आप जैसे अगर आप ये वाला लेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा रो और ये हो जाएगी कॉलम। जिस तरह मर्जी, इसको कॉलम रो करें, डॉट प्रोडक्ट तो बराबर ही है। तो अगर जब इसको रो बनाएंगे तो hi1 hi2 के साथ जाएगा और hi2 hi1 के साथ जाएगा, ठीक है। अब इधर हो जाएगा hi1 hi2 और इधर हो जाएगा hi2 hi1। अब देखें दोनों सेम है, कॉन्जुगेशन का फर्क है, वो आप इसका भी कॉन्जुगेट ले लें, वो तो इसमें कॉन्जुगेट ही लेना होता है, या इस साइड का कॉन्जुगेट ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप प्रोडक्ट लें वो जीरो आ जाएगा आपको। तो हमने ये पढ़ा था कि जब आप उन्हीं कोफिशिएंट्स को एक वेक्टर की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे l क्रॉस 1 m क्रॉस 1 जो हमने बार बार देखा, तो फिर क्या होता है कि वो आपकी कॉन्स्टेलेशन स्पेस में एक बाकायदा एक वेक्टर डायरेक्शन बन जाती है। जब हमने वेक्टर डायरेक्शन पढ़ी थी ना, तो उसमें देखिए ना लाइंस बन गई थी। अगर एक चैनल कोफिशिएंट होता फिर तो आपको एक डॉट होता, आप डॉट के हिसाब से देखते, मगर जब आपके पास एक पूरा वेक्टर आया था, फिर आप उसको वेक्टर को पूरा ड्रॉ करते हैं कॉन्स्टेलेशन स्पेस के अंदर, और फिर आप अपने वेक्टर्स को प्रोजेक्ट करते हैं। मसलन आपने रिसीव सिंबल का एक वेक्टर बनाया, आप उसको प्रोजेक्ट किया। यहाँ पे जानबूझ के आप कह रहे हैं कि हमने जो भी काम किया उससे हम प्रोजेक्शन दे रहे हैं अपने सिग्नल की phi2 पे। अब आप देखें phi2 h2 से ऑर्थोगोनल होगा, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो कुछ भी इसमें h2 से सिंबल h2 के जो आए होंगे वो सब जीरो हो जाएंगे, ठीक है। आप h2 के साथ जो कुछ भी आएगा वो जीरो आउट हो जाएगा, क्योंकि आप उसको ऐसी जगह प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो h2 से ऑर्थोगोनल है। से मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा तो हमने ऑर्थोगोनल, फिर ऑर्थोगोनल होंगे ना। जैसे लंबूटी में आपने देखा नहीं था, वो उनके कॉलम्स ऑर्थोगोनल थे, जी u जी वाले भी और h वाले भी, तो सेम यहाँ पे भी है, मगर खैर इससे थोड़ा डिफरेंट है, ये जरा 0 4 मगर कॉन्सेप्ट वही है। हाँ जी, अब तीसरे बंदे का जो सवाल था। तो सवाल ये है कि हमारे पास जो ट्रांसमिट एंटीना होते हैं वो तो हजारों की तादाद में होते हैं, तो सर डी कोरिलेटेड 2x2 का कैसे काम करता है? एक मिनट यहीं पे स्टॉप करें। ट्रांसमिट एंटेना हजारों की तादाद में, ट्रांसमिट एंटेना आप कहाँ पे ले रहे हैं, मोबाइल पे ले रहे हैं या बेस स्टेशन पे ले रहे हैं? बेस स्टेशन पे सर। तो बेस स्टेशन में 1000 एंटेनास होते हैं आपके पास? नहीं सर, अगर एक यूजर को कई एंटीना से सिग्नल आ रहा होता है एक वक्त में, तो आगे सर बंदे कंफ्यूज ना करें, वो एक और चीज़ आप कह रहे हो, तो इंटरफेरेंस है ना, मगर हजारों एंटेनास बिल्कुल नहीं होते आपके पास। अभी तक हमारे पास ज़्यादातर 2x2 या चलें, अब शायद 4x1 या 4x2 आ गया, वैसे उमूमन हमारे पास 2x2 ही चल रहा है। आप देख लें अपने घर में जो पड़ा हुआ एंटेना, उसमें उमूमन 2x2 ही लिखा होगा। तो आपके पास नॉर्मली जो है, या हो सकता है बेस स्टेशन पे वो 8 एंटेनास लगा दें, मगर अमूमन हमारे इवन जो आपके आम मोबाइल्स हैं हमारे पास टू ही एंटेनास हैं इनके अंदर। तीसरा एंटेना डालना इतना आसान नहीं होता छोटे से मोबाइल के अंदर, में बहुत से इश्यूज आते हैं एंटेना थ्योरी के लिहाज से भी, और बाकी तो अगर आपने अनकोलेड रखना तो आपको जगह चाहिए, मोबाइल तो इतना बड़ा है नहीं, ये कम सर या फिर बीट मोबाइल की फॉर्मिंग बात वगैरह कर रहे करके। सर। हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हज़ारों बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। आपने बस देखना है कि आपके सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। आपके सिग्नल को जाहिर है कि कोई 2 एंटेना ही होता है, 4 एंटेना, अगर 4 एंटेना उसने बेस स्टेशन पे लगाए हैं तो उन 4 एंटेना के थ्रू वो सिग्नल भेजेगा, या 2 का है तो 2 से भेजेगा, मगर वो सिर्फ आपकी नहीं भेज रहा, वो बहुत से सिग्नल उसके साथ भेज रहा है। बहुत से 64 यूजर अगर बैठे हैं मतलब 64 को भेज रहा है सिग्नल, आपका भी जा रहा है, मगर आपका जो सिग्नल है वो बाकी 64 से मुख्तलिफ है, या वो फ्रिक्वेंसी में हो सकता है, या वो कोडिंग में फ़र्क हो सकती है, या टाइम स्लॉट्स में वो फ़र्क हो सकता है, या स्पेस के साथ गेन की होगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मगर वो नहीं होगा जो दूसरे का होगा, उसमें कोई ना कोई हमें डिफरेंशिएशन फैक्टर डालना पड़ेगा लाजमन, ठीक है। तो हज़ारों नहीं है आपके पास अपना सिग्नल, एक ख़ास से आ रहा है, बाकी चलें बाकी आ रहे हैं, हज़ारों आ रहे हैं, मगर वो पहली बात है कि वो आपके चैनल से नहीं आ रहे होंगे। हाँ, हो सकता है कि जैसे फ्रिक्वेंसी रीयूज़ होता है कि कोई बहुत दूर कोई चैनल है उसका सिग्नल उठा उठा के आ जाए, तो वो एक अलग, वो आप कह सकते हैं कि इंटरफेयर है, वो बिल्कुल आप ही का कोड हो और बिल्कुल वो हर चीज़ में आपसे टाइम और फ्रिक्वेंसी सारा मैच करके वो आपके पास वो एक इंटरफेयर हो सकता है, मगर ज़ाहिर इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होगा, और उसके लिए भी आप फिर जब सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो आप ख्याल रखते हैं कि उसको आप कैसे नलीफाई करें, मगर वो हम डिस्कशन बाद में करेंगे, ठीक है। हो गया मसला हल? यस सर। ठीक है। So we come back to the lecture here. So that is what we were saying, that the dual receive antenna can perform
one of the two functions. Okay, number one, they can either provide a two-fold diversity gain, as we saw in LMOT. If you two antennas, you get four-fold. From two, you are getting two diversity gain, but if you use two receive antenna, you get a four diversity gain. Okay, when there is no interference. Or, but let us say that if we have, we just use a V blast, where we saw we get double diversity gain, and we were not coding across time. But LMOT you also have to code across time. So if we just use both the antennas, you will get two diversity gain, okay, as we saw in V blast. Okay, but let us say if I say no, in the same MIMO channel I am using two users, so I have to nullify the interference. In that case, you won't get two-fold. You will only get one diversity gain. So, you won't have that two. You will just get one, as we just saw in this decorrelator or interference canceller. So we cannot do both. And we know this is not a limitation of the channel, this is a limitation of the decorrelator. Decorrelator that we are using, this is its deficiency, that we cannot get everything. All right. And very good table here. So very also important for industrial knowledge. You can see in repetition code, yes, you are getting 4 times, but you have the disadvantage that you have to repeat your you have to repeat your symbol, all right, at least 2 times. If you have a 2x2, you have to repeat that, then you will get that. That is why the degrees of freedom was actually half, all right, because you were in 2 slots, you will be getting your one symbol. In LMOT, yes, you can also get 4 diversity gain, very good, but in 2 symbols, okay, you will be getting in 2 slots, you will be getting 2 symbols. In other words, in 1 slot, you will be getting 1 symbol. So yes, your degrees of freedom has improved, but your diversity gain is the same. In V blast, we saw, yes, you are getting double diversity gain. Okay, and degrees of freedom is also maximum, because every time you are sending a different, you are not coding across time, you are not repeating across time, you are just sending different. So yes, you will be getting full diversity gain. For every received symbols, you will be getting double gain. Okay, but your diversity gain will be double, it will not be 4 as in the previous examples. In V blast nulling, we have seen that you will get only 1 diversity gain. Okay, and degrees of freedom you will be 2, because 2 users will be getting their signals. You are getting 2 symbols at a time. The degree of freedom is maximum, but the diversity gain is actually 1. And channel itself, we can see in channel itself we have 4 coefficients, and 4 channel coefficients, they are actually independent from one another. So we have an inherent property of getting a gain of 4. And similarly, inherently, we can see the channel can give us 2 outputs, because 2 coming from 2 independent channels, you can get an output of 2. But not all the techniques can give you all the advantages at the same time. सर ये चैनल itself कोई स्कीम है? नहीं, ये स्कीम नहीं है ना, इसलिए तो नाम रखा है चैनल। चैनल के अंदर क्या, चैनल के अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं, मगर आपके पास टेक्निक नहीं है जो इन सबको यूटिलाइज कर सके। ठीक है, ठीक सर, ये सारी स्पेस टाइम कोड्स हैं, LMOT स्कीम, और ये दूसरी LMOT तो पक्की स्पेस टाइम है, मगर बाकी देखें स्पेस टाइम नहीं थी ना। वी ब्लास्ट तो स्पेस टाइम नहीं थी, आपने टाइम में तो कोडिंग किया नहीं। ओके सर। See frequency diversity. Okay, till this time we are focusing only on narrow band channels or narrow band flat fading channels, where we just saw the channel model is a single tap. Y is equal to H into X plus W. Simple. Okay, there is no multipaths. Okay, there is no tap delay line as we saw in chapter 2. So for flat fading, there is no problem. There is simple 1H multiply with 1X. As we saw in all the LMOT and all those schemes, they were all flat fading. You were just multiplying 1H with 1X added with noise, and you were getting your output. Okay, from 2, 4, 3, and that is another thing. But every symbol was just being multiplied with 1H. That is a flat fading channel. But now, we also have wideband channels. Okay. Now here what happens is the transmitted signal arrives over multiple symbol times. Now if I send my X
That x, alright, that x comes with h0, but that x will also come with h1, h2, h3. Why? Because we have 4, 5 multipaths. So one multipath comes, then after some time the second multipath takes the same signal from some other multipath, and both those two paths are distinguishable at the receiver. For a single tap or a flat feeding channel, you have a single tap. There are multipaths, but they combine to give you a single tap. Okay? But here there is the opposite. There are multipaths, but they come after a lot of time. They do not come in one single time. They come after one single time. So they have to be dealt with independently. Okay? That is a wideband channel. So transmitted signal arise over multiple symbol times. Alright, not one symbol time, but multiple, and the multipaths can be resolved. So multipaths on narrowband may be there, but they were all coming in one symbol time. But here we have multipaths which are coming over multiple symbol times, and they will be resolved at the receiver so that we can get the gain. सर जी सर ये टर्म समझ नहीं मज़ीद समझ नहीं आई मल्टीपल सिंबल टाइम्स हम तो ये भी तक पढ़ते हैं ना कि एक टाइम स्लॉट फिर सेकंड टाइम स्लॉट में वही रेपिटेशन हम सिग्नल की मल्टीपल कॉपीज जनरेट करते हैं वो चाहे डिफरेंट एंटीना से हो या डिफरेंट टाइम स्लॉट्स पे हो तो फिर ओवर मल्टीपल सिंबल टाइम्स ये स्पेसिफिकली ये टर्म की नहीं समझ ये आपने पढ़ी ना, ये पहली दफा पढ़े ना आप। सर मतलब इससे पीछे अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा, चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया था, उसके बाद सारा गायब हो गया, अब आप पहली दफा उसको रिवाइज करवा रहे हैं। अच्छा सर, अभी जितनी भी डाइवर्सिटीज हम पढ़ी हैं वो जस्ट फर्स्ट सिंबल टाइम पढ़ी है, वो फ्लैट फेडिंग है ना, वो सारी की सारी क्या है, फ्लैट फेडिंग चैनल, नैरो बैंड फ्लैट। अब आप क्या पढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव या वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव चैनल, वहां भी हमने देखा था। जी सर, इसका मतलब हम सिंगल चैनल कोफिशिएंट नहीं पढ़े, अब चैनल फिल्टर टैप को स्टडी करने लगे। अब टैप डिले लाइन आ गया, पहले सिंगल टैप था, अब पूरी टैप डिले लाइन आएगी। ठीक ठीक। The frequency response is no longer flat. It is not flat because why? Transmission bandwidth is greater than the coherence bandwidth of the channel. This we saw in chapter 2. If the bandwidth of your signal, okay, is greater than the coherence bandwidth, okay, you know what is the coherence bandwidth? If the signal bandwidth is greater than the coherence bandwidth, then yes, you will have various multipaths, and the signal will be coming at various other times. So this is the case that the bandwidth becomes greater than the coherence bandwidth. So that is why we can use the very important principle of frequency diversity. So if my available bandwidth is greater than the coherence bandwidth, I can send my signal or its replicas in different coherence bandwidths. जैसे हमने थोड़ा बहुत देखा था वो जो एग्जांपल टीडीएम में की थी, फ्रीक्वेंसी हॉप देखा था। अब आपने कहा जी गाड़ी स्लो हो गई, बंदा स्लो हो गया, अब आप उसको डाइवर्सिटी कैसे दें, ठीक है ना, आप डाइवर्सिटी कैसे दें उस बंदे को, चैनल तो चेंज ही नहीं हो रहा, अब आप इतना देर तो इंतजार भी नहीं कर सकते, तो आपने कहा जी ठीक है जी आप फ्रीक्वेंसी हॉप कर दें, अभी सिग्नल्स को पहला सिंबल उसका इधर भेजें, अगला जो होगा ना उसका जो स्लॉट या जो भी बनेगा, जो उसका पैकेट होगा, वो आपने किसी और फ्रिक्वेंसी में भेजना है। तो यही था, जो एक और फ्रिक्वेंसी में भेजेंगे वो उसकी कोहेरेंस बैंडविड्थ से दूर होगी, तो वो फ्रिक्वेंसी डाइवर्सिटी ही था, ठीक है, वो मगर हमने उस कॉन्टेक्स्ट में देखा था 2G के केस में। अब हम जरा थोड़ा ज़्यादा इसको वाइड बैंड स्टडी करेंगे इसको। So now we will be using another form. We have studied time diversity, which was outside coherence time, ठीक है, then we studied space diversity, where the channel where the antennas are placed so that the channel coefficients are independent, okay, of the channel coefficients of the first antenna. Now we are discussing in terms of frequency. We will be using those frequencies which are outside the coherence bandwidth so that you get an independent channel. So first of all, what is a model? So we have studied the general model is the same as the model given in chapter 2, that your output is actually the convolution. Previously for flat feeding you just have H into, you have L0, only L0 exists, and this was M minus 0. It was just H0 M into XM, or in other words you can just, there is no summation because L is just 0, it was just HM into XM.
You can see in the beginning of chapter 3. But now the problem is that we don't have only H0, we have a lot of H. Let us say my tab line has L different paths. This means if I'm sending my signal is coming through L different paths to my receiver, and they are all resolvable. They are coming in different symbol times. So I have to take care of them. Okay? So I represent all of them with my, this is the, let us say, so you know this HL can also change with time. So I am representing this with at mth time, what is the value of Lth tab? L can go from 0 to L minus 1. Let us say L are the total number of multipaths. So L will go from 0 to L minus 1. या आप कहते हैं 1 से L, वो मर्जी जिस तरह मर्जी कर लें. So let us assume that I just sent x0. मैंने एक ही सिंबल भेजा सिर्फ x0. उसके बाद मैंने कुछ भेजा ही नहीं. अच्छा जी, what happens? If I send x0 here, you can very well see that what will happen? X0 will go with H0L, but X0 will also go with H1 of L, H2 of L, H3 of L. All right. सही है. So you can very well see that your symbol will automatically be replicated L times by the channel. देखिए ना, मैंने अभी भेजा और वो सिंबल उसको पहले टाइम स्लॉट में मिल गया, बड़ी अच्छी बात. मगर the same symbol वो अभी चैनल के अंदर बैठा हुआ है. In the next symbol time it will come with the second channel coefficient. In the third symbol time it will come with the third channel coefficient within a third multipath. तो inherently चैनल के अंदर ही खुद एक multipath बन गए. So consider first the one short communication situation where one symbol is sent at time 0 and no symbols are transmitted. The receiver observes, receiver क्या नजर आता है? हाँ जी, कहेगा at y0. All right, मतलब जी आप कुछ कह रहे हैं सर? m डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन है ना? हाँ, m आपकी आउटपुट है, इसको आपने डिस्क्रिटाइज किया ना, जैसे हमने चैप्टर 2 में देखा था. ठीक है, तो आपने 0 टाइम पे सिर्फ भेजा था और आप तो उसके आगे नहीं भेज रहे. मगर हो क्या रहा है, y तो आपको 0 से लेके पता नहीं L-1 तक या L तक मिल रहा है या L टैब्स तक मिल रहा है. y आपको काफी आगे तक जा रहा है. क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? मैंने तो सिर्फ एक ही x0 भेजा, उसके बाद x0 तो भेजा ही नहीं. आई हैव नॉट सेंट माय x0, नॉट रेप्लिकेटेड, नॉट डन एनीथिंग. But the channel is such, first x0 will multiply with L0. Then x0 will go with another H1. Then x0 will go with another H2, H3, H4 up to L minus 1. And it will be again added with some other noise at every other channel coefficient. यहाँ चैनल को मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ हर अलग नॉइज से वो ऐड हो रहा है. एंड outputs, they will not only come at L0, but they will be going on and on till the number of channel coefficients or till the value of L. So let us say L is going from 0 to L minus 1. So I will receive a symbol from 0 to L minus 1. अगर आप 1 पहला ले लें, I will receive my symbol from 1 up till L time slot. Decayed replica signal are providing L branches of diversity in detecting X0. Hence the tab gain HL are assumed to be independent. So yes, because all of them are coming to different channels. ठीक है, अच्छा ये भी होता है भाई, एक मल्टीपाथ सेकंड टाइम स्लॉट में आया, दूसरा जो है वो थर्ड में आया. अब हो सकता है जो सेकंड में आया हो, इट माइट बी अ सम ऑफ मेनी मल्टीपाथ्स, but that will be totally independent of whatever the channel path you are getting in the third time slot. It could also be a sum of many multipaths, but we are not understanding. We know that once they summed up, they, you know, with that all that central limit theorem and all that, you will still get a CN, okay? Complex Gaussian random variable with all that. So this diversity achieved with the ability of resolving the multiparts at the receiver due to the wideband nature of the channel, and this is called frequency diversity. So we call this because we have a wideband nature. The channel's signal bandwidth is greater than the coherence bandwidth. So that is why the signals are receiving different responses
from the different responses of the channel, and that is why they are getting different channel coefficients. So we are utilizing this frequency diversity, and that is why these techniques which we utilize them are called frequency diversity techniques. Now, what could be the simplest system that could be built on this idea? What I do, I say, all right, send L symbol. अब यहाँ पे कोई हमने कोई माइमो शैमो नहीं डाला, सिर्फ हम बात कर रहे हैं एक एंटेना, मगर एक एंटेना से दूसरे एंटेना तक, या फ्रॉम द ट्रांसमिट टू द रिसीव एंटेना यू हैव मल्टीपल पार्ट्स. वी हैव नॉट अप्लाइड MIMO and SIMO and MISO and whatever, MISO, SIMO or MIMO. We are just discussing one in one antenna. So he says, all right, in one slot send first symbol, but till from first slot to L slot, do not send anything. Do not send anything. Then in the L+1 slot, send the next symbol. Then from L+1 up till L+1 plus L, do not send anything. Now what will happen? So at the receiver you say, all right, I get the first signal in the first time slot. All right, I get another copy of the same signal in the other time. So I'm waiting up till L symbol times. Till L symbol times, I will get L replicas from different multipaths or from different independent paths of my same signal. So if I will combine them, I will get a diversity gain of L, capital L. But what is the disadvantage? Disadvantage that you are not utilizing your degrees of freedom. Your degrees of freedom, instead of being 1, it will be 1 over L, because in every L slots you are getting 1 symbols. So your rate per slot is 1 over L. So that your degree of freedom is bad, but you are getting L diversity gain. And we can also thought of it as it is analogous, similar, or it is like repetition codes used for both time and spatial diversity. So in time diversity, what happened for repetition codes? I send my symbol, but after another coherence time, I will send the replica of my signal. Let us say if I want a diversity gain of L, I have to use L different coherence times. So again, I will be not utilizing my degrees. I am wasting my degrees of freedom. And what happened in spatial diversity with respect to repetition codes? I said, all right, I send my 1 symbol. All right, all the antennas are sent silent. For example, in MISO, I said, if I send 1, let all of them be silent. All right. Then I send the same symbol from another antenna. All right. And then all others are also silent. All right. So yes, you will be getting, if the same symbol is sent from all the transmit antennas, but in different time slots. So yes, that will be repetition code for spatial diversity. You will be getting full gain, but again, you will not be utilizing your degrees of freedom. Now, what happens here? Now we want both things. We want L gain as well as we want to utilize our degrees of freedom. So what we do? We send every different symbol in every time slot. All right. I send my first symbol. Then I send another symbol in the second slot. I do not wait up till L slots. So then what will happen? The problem will be ISI, inter-symbol interference, because in detecting one symbol, you will be getting the replicas of all of the previous symbols, which will be coming from different multipaths. That is called ISI. I think you all have, हाँ जी ISI पढ़ा है पिछले आप लोगों ने? हाँ जी साथ साहब आप तो यूनिट से हैं, अच्छा आप नहीं पढ़ा, शिराज सर नहीं पढ़ा, नहीं शिराज सर आपने कहाँ से पढ़ा पीछे अंडरग्रेड? सर यूटी फैसलाबाद। अच्छा यूटी पढ़ा आपने पढ़ा, चलें ठीक है. So it is very simple. You can also study in Procase books. There we cover in chapter 10. So if different symbols come in the same time, we call it to be inter-symbol interference. Now, how should I deal with ISI?
while at the same time I want to utilize my frequency diversity. I want to get the diversity gain, but I also want to utilize my degrees of freedom which I am getting. How to deal with this dual problem? So there are three common approaches in industry which make up the 2, 3 and 4G systems. And you know the 4G is actually being utilized also in the 5G. So the first is the single carrier system with equalization. All right. In this system, we use linear and non-linear processing at the receiver, and ISI can be mitigated. We'll be setting this to some extent. We will be using maximum likelihood detection. All right. So whenever I say maximum likelihood, as we saw earlier for LMOT, and also we repeated the same term. So when you are detecting jointly, as we use joint detector, you are not detecting singly one symbol, but you are detecting two symbols jointly. As we saw in joint detection, you get joint gain. So what is the optimal maximum likelihood detection? As we saw optimal ML detection in terms of LMOT for MISO. So what is the optimal ML detection for the transmitted symbol in case of this wideband channel? And we will see that is because of this Viterbi algorithm. But its complexity grows as the number of taps increases. So it is typically used when the number of taps are small. 4, 5 is also good. Then we have other techniques also, linear equalizers that are used to detect the current symbol while suppressing the interference from other symbols, and they have lower complexity. But we want everything. We just have to cover from a broad perspective. Details you might find in some digital communication course or advanced digital communication course. You will find the details of their implementations, or in some encoding course also. Now what is direct? This is the the technology used for 3G. So what happens? The information symbols are modified by pseudo noise. अब देखें वो 2G में आपको मैंने can see here we saw that also example of 2G single carrier system where we saw in the example in the last few lectures, we saw TDMA example. You had a single carrier. All right, you have distributed your total bandwidth into 200 kilohertz, 200 kilohertz, bands. All right, and each of those bands was then time multiplexed into 8 users. So each was a 200 kilohertz bandwidth channel. That was a single carrier system. Single carrier having an approximate bandwidth of 200 kilohertz. But what will happen for one user? You will take if you have 8 users, so you have single. Let us say my carrier is sitting at 950 megahertz. So in those 8 different slots, I will be switching my 950 megahertz through those 8 different users. This is one system. But what happens in another system? How the channels are defined in this 3G? In 3G, we use this PN sequence, pseudo noise sequence. We spread our signal so that the bandwidth is very large, much larger. There's the spreaded bandwidth. When we spread the signal with the pseudo noise sequence, its bandwidth is much larger than the actual signal bandwidth. All right. So in that case, the symbol it is very small in comparison to the bandwidth. Actually, you spread the user signal to the total bandwidth available to the company. It's a huge spread. अब आपका सिग्नल तो 3 किलोहर्ट्ज का, आपने उसको स्प्रेड कर दिया 25 मेगाहर्ट्ज या 50 मेगाहर्ट्ज में. You can see the rate that you have. So in that case, you can very well see the ISI will be very, very small, because your actual data is a very small bandwidth, but you have spread it. All right. So we will be discussing also this in detail when the time comes. So actually your ISI will be very much reduced. Okay. But yes, it leads to inefficient utilization of the degrees of freedom of the system. But what is the advantage? That multiple users can share the total degrees of freedom, and each user appears as pseudo noise to other. So every user has a different pseudo noise sequence, but all of them are spreaded with W bandwidth. तो वही बात हो गई ना, आपने यहाँ तो W में हर को डिवाइड कर दिया, या आपने सबको ही W दे दिया मगर सबको स्प्रेड करके दे दिया, एक pseudo noise sequence. So but details will be coming as we will be going through these discussions. The foremost now used in 4 and 5G, that is a multi-carrier systems. So what happens in multi-carrier systems?
that actually what you do, you have your ISI channel, that is the problem is there, but you actually convert your wideband or ISI channel into a set of non-interfering orthogonal subcarriers. Each has only a narrow band flat fading channel. So similarly, you can say as frequency hop technique. Okay? So what you do, you basically, all right, I have a very big channel and I have these many, let us say my bandwidth is 50 megahertz and coherence bandwidth is 1 megahertz. But I know that after 1 megahertz, I have an independent channel coefficient. So what I have 50, let us just say, I'm just saying for sake of simplicity, if 1 megahertz is a coherence bandwidth, I have 50 channel coefficients, all right, which are independent from one another in terms of frequency. So why not I divide my data in, let us say 50, I take 5 of those carriers which are in different frequency bandwidth. So my data will be divided into those 5 frequency carriers. Each will be going in different coherence bandwidth, and each will be of a very small bandwidth. Within that coherence bandwidth, उसका 200 के लिए 1 मेगाहर्ट्ज के अंदर bandwidth होगी. ओवरऑल को आपने तोड़ दिया और उसको छोटे छोटे चैनल में पास किया, और हर चैनल जो छोटा होगा वो एक ही कोहेरेंस बैंडविड्थ के अंदर होगा. सो यू विल हैव नो ISI. ठीक है, and we will be studying that can be obtained by as the time comes. This is called the famous OFDM, orthogonal frequency distribution, or you can also do multi-tone, but mostly we use OFDM. And frequency hop spectrum that we also saw earlier can be viewed as a special case where one carrier is used at a time. So in frequency hop that we saw previously, so this is actually frequency hop spread spectrum that you you spread the spectrum by hopping over different frequencies. Okay. But there you can see that you are doing this hopping one at a time. But here in OFDM, what happens that you actually take 4 carriers for your single user, and you will be sending a signal from those 5 carriers. And this can happen that you can change those 5 carriers to some other carriers at some other time. But we will be seeing in detail as the time comes. So you can see here GSM is a single carrier system that I told you. CDMA is the direct sequence that we just saw. And this is at that time, 4G was not that pronounced when this book was written, but now you can say that OFDM or the 4G systems are an example of multi-carrier systems. So we will be studying all these techniques turn by turn. So we will be actually translating from a single user to multiple users and their issues. So we can see that frequency diversity is intrinsic. It is always there. If you have a wideband channel, you will always have frequency diversity. But presence of ISI is not intrinsic. If you will use single carrier, you have ISI. All right, you have a problem, no problem. All right. But if you use, for example, direct sequence spread, you will not have ISI. If you use OFDM, you will have no ISI. So ISI is not an intrinsic thing with a wideband. It depends on your modulation technique. So frequency diversity is still present in OFDM, but ISI is not present. So frequency diversity is inherent in a wideband channel, but ISI is not inherent in a ISI channel. Yes, narrowband, they have a relatively high SNR because you just have one carrier. But in wideband systems, you actually spread the signal over the whole wideband. Yes, so the energy is spread. Okay, you don't have a single high carrier. The energy is spread throughout the bandwidth. Channel uncertainty we will be discussing in the next section, so we will not discuss it now. Now we have single carrier with ISI equalization. So this is the main subject of study for 2G systems, how they were working and how they were dealing with ISI. Remember what was happening in 2G systems. You have a single carrier. All right. So you have a single carrier that is taking your signal. Okay, and then the problem is that the signal carrier, once it is taking your signal, it is going, it has a wide band. It is going through a channel whose coherence bandwidth is less than your wideband channel. Then you can very well see that you will have different multipaths,
and you might have L different multipaths through which the signal will be coming at your. And this is not only used for wireless actually, as you have studied in your previous undergrad course. This is also used in wireline applications, even in waveguide, even in optical fibers, even in telephone lines, even in coaxial lines. You have this ISI. You might have two different channels that will be transmitting the same signal, and the signal bandwidth is covering two channels, so you can very well see that they both will be interfering at your receiver. So much work has been done, and is a very well defined classical theory for communications. But again, we won't be going into every other day. We will be just focusing on the wireless aspects, especially how can we define diversity with respect to wireless channels, not with wireline channels, and that is the main function. So we assume we have uncoded, we know no coding across time, और वो जो अनुमति भी कोई नहीं है, repetition भी कोई नहीं है, beyond repetition कोई आपने ये repetition तो खैर वो uncoded थी, मगर जो हमने पढ़ा था beyond repetition कोई coding shooting नहीं, आपने कोई घुमाया फिराया नहीं, cos shots नहीं है, कोई rotation नहीं किया, कुछ नहीं किया, बिल्कुल uncoded independent symbols हैं जो x1 से जा रहे हैं infinity तक symbols जा रहे हैं, ठीक है. But I am sending my symbols over frequency selected channel, but the channel is frequency selected, यानी इसमें multiple paths हैं. अच्छा, एक हमने ये तस्वीर कर लिया कि ठीक है मल्टीपल पाथ्स है, मल्टीपल पाथ चेंज भी हो सकते हैं, मगर हमने ये अज्यूम कर लिया कि तकरीबन n टाइम स्लॉट्स तक कोई n सिंबल टाइम्स तक आपका चैनल चेंज नहीं होता. ये हमने पहले भी देखा हुआ है काफ़ी दफ़ा कि जो चैनल का कोहेरेंस टाइम है वो बहुत बड़ा होता है चैनल के डिले स्प्रेड से. अब डिले स्प्रेड में देखिए ना 4 पाथ्स आ गए, मगर कोहेरेंस टाइम तो बहुत ही बड़ा होता है, तो वो तो चार पाथ्स को जो कोफिशिएंट ठीक है कि 4 डिफरेंट है, मगर वो कोहेरेंस टाइम के अंदर तो वो 4 सेम ही रहेंगे, ठीक है. तो अमूमन आपको कोहेरेंस टाइम बहुत लगेगा, अंडर स्प्रेड कहते हैं, तो कोहेरेंस टाइम वैसे काफ़ी लार्ज होता है स्प्रेड टाइम से, ठीक है. सो दैट इज़ वाई वी कैन वेल एज्यूम दैट लेट अस से मतलब कोई है आपके पास टाइम पीरियड है, कोई कोहेरेंस टाइम है जिसमें आपका चैनल वेरी नहीं कर रहा, ठीक है. सो लेट अस से उसको हमने, अब वो तो कोहेरेंस टाइम है अगर 20 सेकंड है तो आपका एक सिंबल टाइम 1 सेकंड आपका 20 सिंबल टाइम तक मेरा चैनल जो है वेरी नहीं करता. तो इन दैट केस दिस विल बी द आउटपुट. तो देखिए ना ये वही कॉन्वोल्यूशन ही हो रही है, बस पहले आपने लिखा था HLM, अब M डालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि HL तो चेंज ही नहीं हो रहा n स्लॉट्स तक, तो इसको HL रहने दें आप. ये वही है जिसको आप कहते हैं कॉन्वोल्यूशन कहते हैं ना. ये होता है y ऑफ t, ये होता है x ऑफ t माइनस टाउ, और ये क्या है h ऑफ टाउ, ठीक है. और ये जो नॉइज़ आपने ऐड कर दी, ये आपका वही वाला चैनल है जिसको आप कहते हैं मतलब वैसे तो एक्चुअली तो टाइम वेरिंग चैनल होता है, मगर ये आपका एक्चुअली आपने इसको LTI चैनल ही बना दिया, मगर विद इन वन कोहेरेंस टाइम, ठीक है. यस वी नो HLRIIDs दे आर रियली वी हैव सीन. अच्छा, वहाँ हमने उनकी वेरिएंस ली हुई थी 1 या CN01, यहाँ पे आपने लेना CN01/L, ठीक है. सो ये क्यों लिया आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि जब आप इसको सबको कंबाइन करेंगे तो 1/L को जब आप ऐड अप करेंगे तो 1/L टाइम्स L हो जाएगा सबकी वेरिएंसेस, ठीक है ना. तो वो आपको 1 ही मिलेगा, तो ताकि आप उसको उससे मुकाबला कर सकें सिंगल के साथ, इसलिए उसने 1/L लिया. कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, आपने नहीं ना लें, जो अब वो हम बुक को फॉलो कर रहे हैं तो उसको ऐसे ही करें. अच्छा, तो वी वांट टू टेक ईच ऑफ द ट्रांसमिटेड सिंबल. अब हम हर सिंबल में नया भेजे जा रहे हैं. Now, how to deal with this? I know every symbol is repeating inherently by the channel L times, and I am sending a new symbol in every time, so I will have a lot of ISI. How to do? So how to extract the symbol? This is called the famous equalization. Okay, means you equalize the channel effects so that you can get rid of all the channel effects, and you just get one symbol without any interference from other symbols, as well as a diversity gain. It's in every symbol time, significant ISI. Can we still get, the question is, can we still get maximum diversity gain? That we have to study. Now, how to solve this? And this is the beauty of this book. And this beauty is that he has given us one structure of space-time, which was actually a very general structure. And that space-time structure will be also able, it is so strong a structure that we saw it was able to represent a MIMO. It was able to represent MISO. It can very well represent only a time diversity channel. But here you will see that this our space-time
criteria or this MISO channel representation in the last few sections is also strong enough to represent a frequency selective channel. So how to do that? We say you transform your frequency selective channel into a flat fading MISO channel. अच्छा आप कहें थोड़ी देर के लिए सोच लें कि ठीक है जी बड़ा फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिव था, हर एच डिफरेंट था, मगर आप समझ लें कि आपका जो योर फ्रिक्वेंसी चैनल हैज बिकम a flat fading MISO. What you will say, sir, how can we do that? What will happen to the channel gains which were, you know, from one single antenna to one transmit receive, I was getting L different paths. How can we do that? So we say no problem. You just assume that you have L transmit antennas. All right. So each transmit antenna you have a MISO. All right. So from L antennas you are getting a signal at your one receiver. So you have L different channel coefficients and they are already independent in MISO. So you have actually transformed the inherent L multipaths and you are actually visualizing them in terms of L different antennas. It is just like you have L different antennas and you have L different antennas and you bring your signal and it is transmitted through L different channels. Now let us see this scheme. पहले ये पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको दिखा भी दूंगा, फिर इसकी फिगर भी दिखा दूंगा. Let us consider this scheme. You can make many schemes. All right. Let us make this scheme on this MISO channel. You say, all right, at first time slot, I send X1 on the first antenna. All other antennas are 0. All right. In the second time slot, I send X1 in the second antenna and X2 in the first antenna, and all other are silent. In M time, I will be sending M minus L in the L plus 1 antenna. ठीक है, up till L antennas and all other will still remain silent. इसको इस तरह समझें आप, थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको. आप ऐसे करें, आप कहें जी at t is equal to m, ठीक है, xm minus l is transmitted on L plus 1 antenna where we know that L is going from 0 to L minus 1. ठीक है, आपके पास L multipaths है, उनको आपने assume किया कि वो L antennas है. For example, at t is equal to 4, ठीक है, at m is equal to 4, t is equal to 4, जो भी आप कहें, t is equal to 4. So आपके पास क्या ट्रांसमिट होगा? 4 minus L. अब 4 minus L क्या हो सकता है? 4 minus L आपका 4 minus 0 भी हो सकता है. अब लेट अस से कि जी हमारा L जो था वो 4 उसके चैनल कोएफिशिएंट्स थे. सो आपका क्या होगा? x4 minus L 0, x4 minus 1 L is equal to 1, x4 minus 2 L is equal to 2, x4 minus 3 L is equal to 3. जाहिर आपके 4 थे तो L0 से लेके L3 तक जाएंगे आप. और ये आपने कब किस एंटेना पे भेजना है? ये आपने भेजना है L plus 1 एंटेना पे. यहाँ पे L0 तो 0 plus 1 एंटेना भेजिए, यहाँ पे 2 एंटेना पे, यहाँ 3 एंटेना पे 4 एंटेना, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंटेना पे t is equal to 4 टाइम पे आपने x4 x3 x2 और x1 भेजना. ठीक है, इसी चीज को उसने यहाँ पे फिगर में भी शो किया, मगर थोड़ी सी गलती है. उसने कहा जी पहले टाइम स्लॉट में सिर्फ x1 भेजना आपने और कुछ नहीं भेजना. सेकेंड टाइम स्लॉट में आपने क्या किया कि आपने x1 को सेकेंड एंटेना से भेजा और फर्स्ट एंटेना से आपने x2 को भेजा, बाकी किसी से कुछ भी नहीं भेजा. इस तरह से थर्ड टाइम स्लॉट में आपने x3 भेजा फर्स्ट से, x2 भेजा सेकंड से और x3 भेजा थर्ड से. ये गलती है, x1 है, इसको आप करेक्ट कर लें, x1 लिखा हुआ है, x1 को भेजा थर्ड से. ठीक है, और इस तरह से फिर अगले फोर्थ टाइम स्लॉट में आपने x4 को भेजा 1 से, x3 को भेजा 2 से, x2 को भेजा थर्ड से और x1 को भेजेंगे आप फोर्थ एंटेना से. ठीक हो गया? सो अगर आप देखें तो एक्चुअली ये हम मॉडलिंग कर रहे हैं ना, तो ये मॉडलिंग ही होगी, क्योंकि जब आपने x1 भेजा होगा, अगर एक फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव चैनल होता तो ऑटोमेटिकली अगले टाइम y2 स्लॉट पे 2 स्लॉट पे ऑटोमेटिकली x1 h1 के थ्रू आता. यहाँ तो आप उसको तस्वीर करें ना कि भाई मैंने अपने तस्वीर कर लें कि जी मैंने भेजा, मगर एक्चुअली फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव में क्या होगा? आपने सिर्फ एक दफ़ा ही भेजा, एक दफ़ा भेजेंगे, अगले स्लॉट में खुद ब खुद वो y2 में आएगा और फिर अगले थर्ड स्लॉट में वही x1 जी एक गलती x1 कर लें, वो h2 के थ्रू आएगा और फोर्थ स्लॉट में यानी लिखा हुआ x1 जो है वो एक और चैनल के थ्रू आपके फोर्थ स्लॉट में आएगा. मगर उसको आपने जो स्पेस टाइम में रिप्रेजेंट करना तो आपने कहा भी चलें एज्यूम कर लें कि आप उसको डिफरेंट एंटेनास के थ्रू भेज रहे हैं, मगर इस तरतीब को आपने इख्तियार करें जो तरतीब मैंने अभी आपको बताई है, जो बुक में बताई है, सो दैट यू कैन रेप्लिकेट योर मतलब योर फ्रीक्वेंसी चैनल विद अ स्पेस टाइम
matrix of a Mizo channel. The receive symbol at time m in this is precisely the same as that in this frequency channel under consideration. So a very good model has been designed with respect to our space-time matrix. Once we have transformed our frequency channel into a Mizo channel, we can exploit the machinery that has been developed previously. All right. So first, it is clear that if I want to achieve full diversity gain on my symbol, let us say at some time x of n, so I will need to observe the receive symbols up till time n plus l minus 1. देखिए ना, x of n पे फर्स्ट में कोई आपका सिंबल आ गया, मगर वो तो सिंबल आपका पहला सिंबल आया होगा. आपको पता है कि वो सिंबल जब आया है उसके तो पता नहीं कितने अभी इसके एल रेप्लिकास पहुंचने हैं. अभी पहला आपको रेप्लिका पहुंचा, तो ठीक है, आप इंतजार करें, पहला आ गया. दूसरे में भी देखो, तीसरे में तो आपको एक्स एन से लेके एक्स एन प्लस एल, ये आपका एल 0 के लिए हो गया, और ये जाते थे एल माइनस 1, यानी कि पूरे एल जो आपके चैनल कोएफिशिएंट्स के थ्रू वो एक सिंबल जो डिफरेंट रास्तों से आएगा वो सारे के सारे आपने गेट कर लिए. जब आप उनको गेट करेंगे तो फिर आप फुल डाइवर्सिटी गेन ले सकते हैं. आपका सिस्टम मैट्रिक्स क्या रहेगा. अब आपने वही मैट्रिक्स की इक्वेशन यूज करनी जो आपने LMOT में या जो स्पेस टाइम में यूज किया था कि y इज इक्वल टू h इंटू एक्स प्लस डब्ल्यू. एक्स आपका एक पूरा फुल फ्लेज मैट्रिक्स है, ठीक है ना. वहां पे तो आपका था l क्रॉस n था, जैसे वो l क्रॉस 2 था LMOT में, और यहाँ पे भी l है, मगर यहाँ पे l इसकी रोज ही है, मगर वहां पे l नंबर ऑफ एंटेना है, यहाँ पे l इनहेरेंट मल्टीपल पास है जो फ्रिक्वेंसी डाइवर्सिटी चैनल में प्रेजेंट है. और इसकी विड्थ क्या होगी, और वहां पे विड्थ आपकी थी कि जितनी दफ़ा आपने टाइम में उसको कोड किया, जितनी दफ़ा आपने उसको रिपीट किया, कभी आप ना करें कोडिंग तो 1 होगा. जैसे वी ब्लास्ट था, आपने 2 दफ़ा किया तो LMOT हो गया. आपने रेपिटेशन में अगर 10 दफ़ा भेजा तो आपने उसको 10 दफ़ा उसको 10 साइज कर दिया उसका, ठीक है. सो यहाँ पे साइज क्या होगा, यहाँ पे वो कह रहे हैं जी अगर आपको गेन लेना है xn तक तो फिर तो आपको देखना पड़ेगा n प्लस l माइनस 1 तक देखना पड़ेगा. तो यहाँ पे इसको आपने टाइम में ले जाना पड़ेगा टिल n प्लस l माइनस 1 तक. सो y आपका वही पुराना y, वो उधर भी वेक्टर निकल रहा था, यहाँ भी वेक्टर निकलेगा. w भी वही पुराना है, h भी वही पुराना है, 1 से 0 से लेकर l माइनस 1 चैनल को, मगर वो एंटेनास की जगह इनहेरेंट चैनल पाथ के अंदर घुसेगा. हाँ, सो एंड द l जो l था वहां पे आपको याद है x का साइज था नंबर ऑफ एंटेनास, ठीक है, टाइम्स जितना आपने उसको मतलब उसको डाला, ठीक है. मगर यहाँ पे आपका जो मैट्रिक्स बनेगा उसका साइज होगा l बाय, यानी कि l क्रॉस l इसकी रोज है और कॉलम से कितने देंगे n प्लस h. चूंकि आपको क्या आप चाहते हैं कि अप टिल n सिंबल तक, अप टिल मुझे n सिंबल तक मुझे गेन मिले, तो फिर ठीक है. अगर आपको इतना मसला है तो फिर n को आपने l प्लस 1 माइनस मतलब कि ये तो l 0 के लिए था, तो n को आपने देखना पड़ेगा अप टिल n प्लस l माइनस 1 तक देखना पड़ेगा. ये देखें आपका बन गया सारा. आपने x1 भेजा, बाकी सारे जब x1 भेजा तो सिर्फ x1 ही मिलेगा. जब x2 भेजेंगे तो फिर आपको x2 x1 दोनों में x1 का दूसरा रेप्लिका आएगा, x2 का पहला रेप्लिका आएगा. इस तरह से वो चलता है, इस तरह बाकी सिंबल्स भी चलते जाएंगे. अब ये जो आपने इतना बड़ा ड्रॉ किया मैट्रिक्स, वो किसके लिए ड्रॉ किया, किसको डिटेक्ट आपने डिटेक्ट करना था x1 से लेके xn तक, ठीक है. डिटेक्ट तो आपने करना है x1 से लेके xn तक, मगर जो आपकी ट्रांसमिटेड सीक्वेंस है वो जाएगी x1 से लेके xn प्लस l माइनस 1. इतने बड़े सिंबल्स लेने पड़ेंगे, मगर आपको जो गेन मिलेगा वो जाहिर है n तक मिलेगा. 2 का तो गेन पहले ही कवर हो जाएगा. अगर आप n को भी ले गए हैं l माइनस, इसका मतलब पिछले सारों को आप जाहिर है l माइनस 1 तक मजीद आपने एक्सटेंड कर ही दिया, उनकी सारी कॉपीज आ जाएंगी. देखिए x2 की सारी कॉपीज आ गई ना, xn की भी सारी कॉपीज, मगर xn पे आखिरी आपने आगे ले जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको xn तक का डाइवर्सिटी गेन चाहिए था.
अब वो कहता है ठीक है जी, अब मुझे डिडक्शन करनी है एक्स की, वेक्टर मैंने वाई रिसीव किया, मैंने डिडक्ट करना है एक्स। तो अब हमने ये सारा कुछ तो पहले ही सॉल्व किया हुआ है कि जब आपने डिडक्शन करनी है वेक्टर की, ठीक है, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकाल लेते हैं बिटवीन टू के, उन दोनों में, यानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ए मैट्रिक्स बिकमिंग एक्स बी मैट्रिक्स, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है, या एक्स ए वेक्टर बिकमिंग एक्स बी वेक्टर, जैसे हमने माइमो केस में पढ़ा था, या वी ब्लास्ट केस में, या लमूटी केस में एक्स ए मैट्रिक्स कमिंग आउट टू बी एक्स बी मैट्रिक्स, या रेपुटेशन के केस में हमने देखा। All right, so what it will be the same as given in 3.85। भाई 3.85 में क्या था देख लेते हैं। अगर आप देखें जो हमने एसटीसी के लिए बनाया था वो यही नहीं था, आपका एक्स ए मैट्रिक्स था फुल फ्लेज, और एक और फुल फ्लेज मैट्रिक्स था एक्स बी। उसी सारे मॉडल पे चलते चलते इनका जो कंफ्यूजन की प्रोबेबिलिटी थी वो ये इसके साथ गिवन थी, ये हमने सारा प्रूफ किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि मेरा एक्स ए है और यहाँ पे भी वो कैप मैट्रिक्स एक्स बी, मगर हमें पता है कि भाई वो मैट्रिक्स तो अपनी जगह, वो तो हमने सिर्फ अपने खेल के लिए बनाया, एक्चुअली तो वो एक सीक्वेंस ही है ना। ठीक है, आप चाहें तो मैट्रिक्स भी ले सकते हैं कि भाई ये कौन सा मैट्रिक्स था जो एक्स ए के लिए था और कौन का मैट्रिक्स था जो एक्स बी, उन दोनों की आपस में कंफ्यूजन की प्रोबेबिलिटी। तो हम कहते हैं भाई ठीक है, या उसको लिख लें या इसको लिख लें, क्योंकि वो एक्स ए जो है पूरा मैट्रिक्स कैपिटल वाला वो कॉरस्पॉन्ड करता है एक्स ए सीक्वेंस को। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये जो मैट्रिक्स था वो इस सीक्वेंस से कॉरस्पॉन्ड, तो बजाय इन मैट्रिक्स की कंफ्यूजन के आप ये भी लिख सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंफ्यूजिंग the vectors xa and xb which actually make up the matrix xa and xb, यानी सीक्वेंसेस ही है ना, एक्चुअली तो वो सीक्वेंस ही जा रही है ना। हम यहाँ पे सीक्वेंस, वी आर नॉट राइटिंग दिस इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ओनली इन टर्म्स ऑफ मतलब कि सीक्वेंस है। असल में तो हम तो कोई ना एंटेना डाले हो, तो खुद ही चैनल के अंदर ये प्रॉपर्टी है, हम तो सिर्फ सीक्वेंस ही भेज रहे हैं खाली। तो सीक्वेंस की आपस में एरर प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो इधर से गिवन हो जाएगी, जैसे हमने पहले पढ़ा था। यही मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स की प्रोबेबिलिटी में पहले पता है, आपने बस ऐसे पुट कर दिया, वही स्पेस टाइम की सारी मैथमेटिक्स यहाँ पे आ गई। लैम्डा स्क्वायर को पहले ही पता है कि वो क्या होता है, इसकी आइगन वैल्यूज होती हैं, और हमने ये भी सारा पढ़ा हुआ है कि ये फिर होता है मॉड, ये मल्टीपल, ये जब एस एन आर बड़ा 1 निगलेक्ट होता है फिर ये मॉड इधर आता है, एस एन आर एल बन जाता है, 4L ऊपर चला जाता है, एस एन आर इधर आता है, और ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल सिग्मा एल आता है जो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स के बराबर होता है। ये हम सारा कुछ देख चुके हैं। एस एन आर का भी आपको पता है कि हमने बहुत दफ़ा देखा है लमूटी के केस में, तमाम एक स्लॉट में सबको सम कर दें तो वो उसका सिग्नल हो जाएगा। And you will get a gain of SNRL, so diversity gain will be of L. But there is one very important thing, that yes, I will be getting an L gain provided I have all the eigenvalues. All these, when I will have all the eigenvalues, I will have all the eigenvalues when this different matrix from which the eigenvalues are being found, it is of rank L. जाहिर बात है भाई, रैंक होगा तो अगर आपका रैंक एल होगा तो फिर ही इसके एल इंडिपेंडेंट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बनेंगे, और फिर इसकी एल आइगन वैल्यूज होंगी। अगर रैंक इसका 3 होगा तो फिर 2 ही इसके आइगन वेक्टर्स बनेंगे, तो 2 आइगन वैल्यूज आएंगे, तो फिर तो आपके पास सिर्फ SNR2 का गेन आएगा, बाकी सारे तो डिपेंडेंट होंगे और आपके पास आइगन वैल्यू सारी 0 आ जाएंगी सबकी, सिर्फ 2 का गेन मिलेगा। हाँ, अगर आपके पास ऐसा हो कि सारी आइगन वैल्यूज आए, कम से कम एल तक तो आ जाएं, सारे आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, आइगन वैल्यूज आ जाएंगी, जिसका आइगन वेक्टर्स उनके इंडिपेंडेंट है, तो फिर ये पूरा प्रोडक्ट भी लग जाएगा आपके पास, और आपके पास ये पूरा प्रोडक्ट लगेगा, SNRL की पूरी पावर आएगी, तो गेन भी आपके पास फुल मिल जाएगा। So probability will decay provided difference matrix XA minus XB is of rank L. ये बड़ा जरूरी है। This is, let us say this is XA, then we will XB, and their rank. This means that their columns, independent columns, the rows must be at least m. हाँ जी, रैंक का पता है या नहीं पता आपको, किससे पूछूंगी? हाँ जी, ये क्या नाम है इनका, सलीम साहब, आप बताएं ना, आप बड़े सवाल पूछते हैं। ओह अच्छा,
शिराज साहब पता है आपको रैंक क्या होता है? चलो ठीक है। यस सर, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, तो अब ये कि जी टोटल एरर कैसे निकालें, तो ठीक है भाई, आप यूनियन बॉन्ड की वहाँ भी हमने यही किया था, यूनियन बॉन्ड पहले भी आपने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया कंफ्यूजन ऑफ एक्स ए विद एक्स बी, ठीक है। अब आप एक्स बी को कोई और वाला ले लें सीक्वेंस, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें, तो एक्स ए की सबके साथ निकालें, सबको ऐड अप कर दें जैसे हमने वहाँ किया होता रिपीटेशन में या बियॉन्ड रिपीटेशन, एक का निकालें यूनियन बॉन्ड लेके सबको ऐड कर दें और आपके पास टोटल एरर आ जाएगा। हाँ, तो आपने हर एक एक्स बी को लेना है जो एक्स ए से डिफरेंट होगा उसके nth सिंबल तक, यानी कि nth सिंबल तक जहां पे भी डिफरेंस आएगा, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि वो एक्स बी और वो जो एक्स ए है वो आपस में डिफरेंट है। तो ये आपने ख्याल रखने का यहाँ पे एक्स ए एक्स बी जो हैं उनको कहीं ना कहीं डिफर होना चाहिए टिल nth symbol. To get full diversity again, the difference matrix must be full rank or for every other xb, for every other xb. Suppose m is the symbol time in which vectors x and xb first differ, then they differ at least once within the first n symbol times, and the difference matrix is of the form. है ना, जो भी x a था, जो असल सीक्वेंस था x a, और दूसरा उसके मुकाबले में एक और दूसरा एरर का वो आप फर्ज करें कि एक्स बी था, ठीक है। वो कह रहे हैं जी सिर्फ उनका जो फ़र्क आता है वो आता है किसी mth टाइम पे। अब जब mth टाइम पे जो फ़र्क आ जाएगा तो वही फ़र्क फिर आगे भी ट्रेवल करेगा, तो वो सारों में ट्रेवल करेगा। तो अब आप देख लें कि अब हर जो रो है वो इंडिपेंडेंट है दूसरी रो से, सही हो गया ना। जब वो इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब इसका रैंक क्या होगा, ये एल आपके टोटल रोज हैं, तो आपके पास रैंक क्या बन जाएगा, रैंक इसका एल बन जाएगा, एल ही बन गया। सो दे सिंस दे डिफर एट लीस्ट एट वंस, ये बड़ा जरूरी है कि टिल एन टाइम एन से मुझे याद है कि एन के बाद जो बाकी आपने एल पसंद है वो तो उसी एन के ही रेप्लिका को देख लेना आप, एन तक आपका मेन गेम है सारा। तो एन के अंदर अंदर कहीं ना कहीं उनको डिफर करना चाहिए, जाहिर है डिफर करेंगे तो भी डिफरेंट सिंबल होगा। अगर वो सेम ही हुआ है, फैसला तो आपने एक्स एन के हिसाब से हर एन सिंबल को लेना है, एन साइज को लेना है। अगर एक्स एन में कोई डिफरेंस ही नहीं है तो फिर तो वो सेम ही सिंबल हो गया, कहीं ना कहीं डिफर करेगा। जब कहीं ना कहीं डिफर करेगा, अगर इवन एन पे डिफर करेगा, ठीक है, तो फिर भी वो मतलब वो फिर यहाँ इसकी जहाँ भी डिफर करेगा उसके आगे एल तक जाएगा, और साइज उसका एन प्लस एल माइनस वन तक है, तो पूरा कवर कर सकते हैं आप। तो फिर भी उसको 4 जगहों पे वो एल जगहों पे डिफरेंस आएगा, और इसका मतलब वो सारी रोज हैं आपस में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये तो था फर्स्ट केस में भी इंडिपेंडेंस है आपस में, ठीक है, और linear independent. This means x a minus x b is full rank because the rank is equal to the total number of rows, which is L. So we can summarize here that uncoded transformation combined with maximum likelihood sequence detection. Remember here we are detecting sequentially, we are detecting one sequence. हमने n plus L तक तो देखा, इतना बड़ा ले लिया मैट्रिक्स, मगर उसके पूरे के जवाब में हमें क्या आउटपुट आएगी, पूरे के जवाब में पूरा एक सीक्वेंस निकल आएगा x1 से लेके xn तक। So uncoded transformation combined with maximum likelihood detection achieves full diversity on a symbol xn using observations up till time n plus l minus 1, ठीक है, डिले ऑफ l minus 1 तो आएगा चूंकि l minus 1 उसके रेप्लिकास जा रहे हैं, सो आप फुल डाइवर्सिटी आपको मिल जाएगी। और वहाँ पहले क्या हो रहा था कि हर एल में एक डिले स्प्रेड में आप एक भेज रहे, मगर आप करें नहीं, हर एल पे नहीं, हर सिंबल टाइम पे भेजना शुरू कर दो। उससे क्या होगा कि आप डाइवर्सिटी गेन भी एल में अचीव हो गई, और ना सिर्फ ये बल्कि आप हर सिंबल को हर टाइम सिंबल टाइम में भेज रहे हैं, तो आपके पास आप देखें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूटिलाइज हो रहे हैं, या आप इसको कहते हैं कि आपको सिग्निफिकेंट कोडिंग गेन मिलना शुरू हो गया। ऑलराइट, द टाइम इज अप, ठीक है, आई विल एंड द लेक्चर जी।
सर एक रिक्वेस्ट है। ओके सर। अच्छा ठीक, आपकी रिक्वेस्ट आपने नहीं बताई सर सर एक रिक्वेस्ट ये थी कि जितना ये नॉलेज अभी हम माशाल्लाह हमने गेन किया है, तो काइंडली अगर इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल या एक्सरसाइज या एंड प्रॉब्लम हो के जहाँ इसको अप्लाई कर सकें तो ज़्यादा अच्छी तरह आप करें ना, मैं मुझ पे क्यों डाल, मैं तो लेक्चर कवर करवा रहा हूँ, तो इतना टाइम नहीं है मुझे, भी आगे एक चैप्टर भी रहता है, वो आप खुद ही करिए एग्जाम, मास्टर्स में तो मैं नहीं करवाऊंगा आपको। एक एग्जांपल तो आपने की, इसकी मैं चला होमवर्क भी चेक करता हूँ, पता चल जाएगा क्या हुआ उसका। सर मतलब हम जो पिछले 7 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं ना, कोई भी सब्जेक्ट वो सर वो 7 एंड प्रॉब्लम्स किसी हद तक चाहे बेशक एक ही क्यों ना हो, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड हो ना सर, वो ज़्यादा अच्छी तरह ना एक कंसेप्चुअल वो आप क्लैरिटी। उनसे कह ले, मैं तो खैर नहीं करवाता, मैं तो सिर्फ लेक्चर ही करवा रहा हूँ, तो वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ऑलराइट, थैंक यू, आई विल एंड द लेक्चर।